तो भाई आज हम लोग बैठे हैं किस लिए? रेजरप्रेन्योर का जो एक 2.0 जो आया है, कैंपेन आया था, उसके लिए हम लोग एक वीडियो बना रहे, रिएक्शन वीडियो बना रहे। मतलब उसका एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया शांतनु लोग ने, तन्मय, साहिबा, बाली और भी बहुत लोग हैं। तो उस पर हम लोग एक रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, देखो कैसा बनता है। Content, but in such a pure and authentic way that monetizing it becomes like a very thin balance. From you guys, I guess. Thin balance. We have, I think, in my view, one of the best content-driven brands that has come out. Tanmay, of course, you've been. I think very few people realize how long you have been doing content. But double aa diya. I remember very few people realize what an old fuck you are. I saw you in 2009, by the way. पर बात तो सही है भाई, जितना पहले से तन्मय कर रहा ना कंटेंट, उतना पहले से बहुत कम ही लोग कर रहा है। तो AIB कब आया था, मतलब किस एज में थे? वही वो बोल रहा ना, 2009 के टाइम का है AIB। तो उस समय और रणवीर अलाहाबादी भी कहीं ना कहीं तो इसी के थ्रू ना भाई कंटेंट में जो अपना ग्रोथ जो किया कि भाई पहले जो अपना इसमें था फिटनेस में पहला क्लाइंट इसका यही बना, इसको हेल्प करता था। और रणवीर अलाहाबादी खुद इसको अप्रोच किया था कि हमको तुम्हारे साथ सीखना है। तो वही 2009 you were doing a comedy open mic in Parel, and then you were already started thinking about this. 2009 2011 तो नहीं था, नहीं कर 2011 when I started, 11-12. Yeah. And Sahiba, you were also like from education to marketing to now all the things that you are also doing. So I think all of you come with very unique points and would love to actually start this conversation off on the premise that entrepreneurs like Nikhil, for example, who's built out WTF, it's amazing, it's taking on a life of its own, to Dipinder, who's doing work in the content space. Everyone's doing this like with a very different focus on it. So how do you guys see that happening? And you obviously work with a lot, you're doing it yourself, but would love to start with that. How is it becoming a superpower for entrepreneurs? आप बताओ। How has it worked for you? मतलब वो तो रेजर ज्यादा बिक रहे, वो तो आपने बता ही दिया है। यार हमारे केस में क्या है, I think for us the consumer has always been a young entrepreneurial Indian. That is how we kind of collectivize our consumer group, young entrepreneurial Indian. And we realize that if we are able to make content which appeals to young entrepreneurial Indians, we will find ways to make our brand fit into it. We actually a lot of our content that was brand first did not work too well. The moment we started making content that was not brand first but brand second or brand third, we realized we could fit well. So we had to find ways to either make it young or entrepreneurial or Indian in nature, right? And entrepreneurial is where the Barbershop fit beautifully. And that's how we started getting people in, and we could kind of feed products into it. And it's actually worked out very, very well for us. I'll tell you what I feel in terms. और ये जो बात बोला ना, एकदम सही बात बोला कि भाई बार्बर शॉप ना वैसे ही लोग दिखता है ना कि जो लोगों को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है जिसका, कि भाई जो भयंकर जो नॉलेज जो लोग शेयर करता है, जो इन डेप्थ नॉलेज, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। मतलब जो लोग नहीं देख रहे हैं, लोग मिस आउट कर रहे हैं। ये हो गया। एक बार बार्बर शॉप का कॉन्टेक्स्ट एक बार बता दो। हाँ, बार्बर शॉप का क्या है कि शांतनु लोग, मतलब शांतनु जो फाउंडर है बॉम्बे शेविंग क्लब का, बॉम्बे शेविंग कंपनी का, वो बैठता है और अपने साथ बुलाता है वैसे ही गेस्ट को, जैसे कोई मार्केटिंग का हेड है किसी का, कोई VC लोगों को बुलाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट को, फिर कंटेंट क्रिएटर लोगों को, या फिर अपने जैसा कि एंटरप्रेन्योर लोगों को जो लोग कुछ स्टार्ट किया हो कंपनी, और फिर वो लोग ना बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन पूछता है, मतलब बहुत सही क्वेश्चन कि कैसे फंडिंग रेज किया है, या फिर क्या सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है, या मार्केटिंग कैसे किया, या ये सेगमेंट ऑफ जो तुम्हारा कस्टमर है, जो कैसे तुम एनालाइज किया कि हाँ यही मेरा परफेक्ट कस्टमर है, फिर उसको कैसे केटर किया, कैसे उसको एक्वायर किया, क्या क्या स्ट्रगल्स है, मतलब बहुत इन डेप्थ, मतलब इतना नॉलेज मिल जाता है ना, लगता है कि भाई MBA क्लास हो रहा है वैसा। एक तरह से थोड़ा बहुत वो रोड मैप टाइप का भी पूरा पॉडकास्ट जो रहता है। और वही चीज़ बोला ना कि वही चीज़ उसके लिए क्लिक किया कि भाई एंटरप्रेन्योरियल कंटेंट बनाए तो वो जाके ग्रोथ मिला कंटेंट में। Of evolution of marketing in the 90s or early 2000s, when we think about advertising, we think about these amazing ads that were funny or used to make you think, had great jingles. You used to go back home and everyone knows those ads, whether it's Nirma or it's Pedialyte, Fevikwik. You remember those if you're Happy Dent, etc. What happened in marketing is it just boomed, it evolved, and everyone started focusing a lot on performance.
Yeah. परफॉर्मेंस में 6 सेकंड के एड्स बनते हैं, 30 सेकंड्स के एड बनते हैं, एवरीवनस बिडिंग एक्सेट्रा, तो वो स्टोरी टेलिंग गायब हो गया. Yeah. And that's where I think content plays a huge role, because that's what was missing, but people enjoyed it most. That's where your consumers could relate to you as a brand. It personified a brand, it made it more real, and that's where I feel content plays an important. ये एकदम सही बात है कि भाई अब सब ब्रांड क्यों कूद रहा है मतलब कि कंटेंट क्रिएशन में, क्योंकि ब्रांड से वो पर्सनालिटी मिसिंग है. मतलब कि सिर्फ पता है कि हाँ एक ब्रांड है, वो सो एंड सो प्रोडक्ट बेचता है, बट अगर तुमको एक कम्युनिटी बनाना है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाना है अपना ऑडियंस के साथ, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है, तो कंटेंट बनाना नेसेसरी है ताकि वो फाउंडर को पहचाने, उसका स्ट्रगल से रिलेट करे कि हाँ भाई ये भी तो मेरे ऐसा है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ भी देखो क्या कर रहा है, बैक स्टोरी पता चले कि क्या स्ट्रगल झेला हो. वही फिर वो कितना अच्छा प्रोडक्ट, जैसे बहुत लोग जो लोग बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, कैसे वो सोर्स करता है. जैसे बहुत ऑर्गेनिक जो ब्रांड्स है तो लोग इतना अच्छा सोर्स करता है, इतना बड़ा उनके पास फार्म है, अपने जानवर लोग को अच्छा से रखता है, उसको अच्छा खाना खिलाता है, तो उसकी जब कंटेंट के थ्रू देखता है इंसान तो और ज़्यादा लगता है कि भाई चलो हम सही जगह से खरीद रहे हैं, सही लोग को सपोर्ट कर रहे हैं. ट्रस्ट बिल्ड होता है. तो ट्रस्ट बिल्डिंग में, कम्युनिटी बिल्डिंग में, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कंटेंट. Important part, the storytelling, the human aspect of it, that makes you more realistic and approachable and acceptable, not just performances. But how did it start helping like commercial enterprises? How is it done for? I think there's a big media reach shift. See, most brands which start today are trying to be better than brands of the past, either in quality or in the ingredients or in any form of quality. Chances are you will be a premium brand. Like 90% of the startup brands you will see will be at 2x plus to their average big company competitor in most cases. That means that most of us are selling to the top 10 to 15 million households in India who can afford anything premium. And you see anything, Gred, Airtel ka broadband subscriber list, Swiggy one wale users, everyone is in this 50 lakh to 1 crore bracket के बीच में. Netflix के कितने सब्सक्राइबर है, तो यही 1 से 1.5 करोड़ अमीर लोगों को पूरे देश के, everyone is selling everything. The one common thing about these 1.5 crore people is they are all ad blocked, right? Hotstar is premium, YouTube is premium, TV में देखता नहीं हूँ, सिनेमा पे आजकल कुछ आता नहीं है, मैं मूवी हॉल में जाता नहीं हूँ, थोड़ा बहुत बिलबोर्ड देखता हूँ on the road. So how do you reach me? There is no way to reach me. So TV does not reach me, right? The answer is you don't reach me. I come to you if I think you are saying something useful or entertaining, ideally both. Yeah. Answer is content. The only way to get to me is if I want to come to you, because also like we were discussing, this set of people they're great sales pitch and bullshit detectors, right? Like you can tell कि आदमी बेचने वाला है from a mile away and be like तू ad कर रहा है भाई, तू छोड़ दे. Evolved consumer है. हाँ, तो बिना content के, if you don't have a direct pipe to your consumer, which doesn't run through any middleman, because as it is middleman को मैंने काट ही दिया है, then पर भाई जो बात बोले बहुत सही चीज़ बोली कि भाई जो अभी जो डिस्पोजेबल इनकम जिसके पास है वो 50 लाख से 1.5 करोड़ का बीच में वो पॉपुलेशन है. इसके पास जो 50 लाख से 1 करोड़ कमा रहे हैं, और वो लोग तो भाई सब सारा प्रीमियम चीज यूज कर रहा है. यूट्यूब का प्रीमियम, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न हो गया, टीवी सब चीज का प्रीमियम. टीवी देखता ही नहीं है क्योंकि या तो फालतू न्यूज मिलेगा या तो कुछ आलतू फालतू सीरियल चलेगा और उसका ऐड तो भाई स्किप कर ही देगा. और वैसे भी टीवी भी तो उसके थ्रू देख रहा है ना, वो क्या उसको बोलता है, सेटअप बॉक्स के थ्रू, तो उसमें भी स्किप करने का ऑप्शन आता है. हाँ, किसी को शायद पता नहीं अब आता है कि नहीं, पर फिर भी टीवी मतलब सोच लो देखते ही नहीं है ना. तो वो चीज़ है. तो उसके तक जाने का अब सोल्यूशन बचा क्या कि वो तुम्हारे थ्रू आ रहा है, तुम्हारा कंटेंट देख के कि हाँ भाई अच्छा कुछ बात कर रहा है या कुछ इंटरटेनिंग चीज़ बना रहा है, तो चलो देखते हैं ये क्या बना रहा है या क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा है. तो वही चीज़ ऊपर से हम लोग आजकल पता भी चल जाता है कि कौन सेल कर रहा है. हाँ भाई, वो बोला ना भाई, जो उस लेवल पे है उसको मालूम है, वो पहले से सुन लेगा कि क्या चीज़ कौन सेल करने आ रहा है और कौन जेन्युइनली सिर्फ बता रहा है, एंटरटेन कर रहा है. तो वो चीज़ है. When we're saying content, are we essentially meaning social media content, or are we broad? There are many different ways. There are many different ways. Like I think events are coming back in a big way. Doing offline stuff is a big one. Consumers are looking, like the rich of the country are looking, and I'm calling them rich, but what I'm saying is
10 lakh plus per annum Household income. earner is rich in this country because you're the top 1.5. हाँ वही जिसका पास डिस्पोजेबल इनकम है तो महीना का 1 लाख से ऊपर वाला लोग के पास है डिस्पोजेबल इनकम तो वो लोग अब खोज रहे हैं भाई। और सच में ये चीज़ तो हमने भी नोटिस की है कि भाई कोरोना के बाद से ऑफलाइन इवेंट्स पे भले एक सेक्शन फोकस कर रहा है बट बहुत लोग अभी भी उस पर वो अपॉर्चुनिटी पे ना मतलब सोया हुआ है भाई। पर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी की ऑफलाइन इवेंट्स करवाओ हर एक तरीका का चाहे वो एजुकेशनल हो एंटरटेनमेंट बेस्ड हो। अब एंटरटेनमेंट हो तो फिर भी होता है जैसे कॉन्सर्ट एजुकेशनल या इंफोटेनमेंट टाइप का वो करवाओ। उसमें बहुत भयंकर वाला भी अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ा। 5% or 1% of this country. You're looking for offline experiences, you're looking for real connections, you're looking for community. You're looking for Coldplay tickets. Yeah, correct. All of you, apparently. And 5 लाख लोग थे यार उसमें। 10 लाख का क्यों था बॉम्बे में at last? 10 lakh in one city. Right? I've never seen this happen by the way. The same question I think the Diljit ke marathon saath wala, hua if you were not allowed to post it, would the same number of people still buy their Coldplay tickets or not? It is people Yeah, around me people who I've buy never, I've hung out with them, heard music with them, etc. It's not like, you know, they were big Coldplay fans, but it's just, I don't know, there's just something I think the about, question to ask is the opposite. The insight here is if you make something which is shareable, this is the madness people will go to. Also, when Right? when you and create this is the enough amount of FOMO. disposable income out there. वो एक टिकट 10-10 हज़ार रुपए की एक टिकट है और 10 लाख लोग क्यू में लगे हुए Achha, हैं। one question. गाने भी अच्छे हैं यार गाने भी बढ़िया है यार Okay, one question, sorry. Why is when they know when they are launching the tickets that it is going to get sold out in 5 seconds or 3-4-5 seconds? So why don't they just increase the prices 4-5x? And like, you know, so many concepts, Diljit or this, they know कि sell out होने वाला है in 2-3 seconds, and if they were 2x the price, तभी भी sell out होता. Because they get the elitism pushback that now only the super rich can afford it. If you get Is that the only reason? 50,000 का Also, is my it will guess. be segregated. Your first layer will be at a base price. Your second opening will be at a higher price. Your third opening will be higher price. So it gets compounded. They will sell it at a very big premium. So I think if they have tickets, the next launch that will happen will be a very अब expensive. तो हर बार पता नहीं होता यार कि कितने में बिकेगा Okay. नहीं बट दिलजीत का भी तो इससे भी महंगी टिकट्स थी और I was blown away by it. But to your earlier point, which is 1.5 crore people who are ad block, who now have the choice, does that make us, especially for people who are getting into the content creation game, where engagement and numbers become very valuable, is it actually then that valuable? Because then what if the audiences that are following are actually audiences that won't pay? Then does it hit your I monetizability? absolutely think so. I think there are two big problems. One is getting irrelevant reach, which is, you know, people who are enjoying your content but who will never pay for your services, at least not in the near term, because they just can't afford it. fans of palm oil Correct. And second is, you know, this duality of if you keep brand first, then they will block you out because they know you're selling, like you learned from your experience कि अगर brand से lead करोगे तो पता लग जाता है बेचने आया तो then but if the brand is too far back, then मतलब what's the value of that impression, right? Correct. Like how do you monetize that impression? So that balance is super hard to, and you know that's why even for creators, and I'd love to, you know, hear from all the great ones here, that the minute you start selling, the minute there is business की fight क्या है, I always have motive, right? So whatever I'm saying is coming from some motive कि ये end में कहीं तो जाके बेचेगा. Correct. Right? So And people expect that also. people No, but expect. talking about the metrics, and maybe you guys would disagree, but I was sitting with Meta and we were running a campaign. This was 2 years ago, and they were giving me the data and whatever came out of the performance ad. And they were really hell bent on views, and I genuinely feel that views are more superficial metric out there because in today's day and age, do you remember the last ad you saw on YouTube? I know Tanmay is a huge multitasker, so even if he's on YouTube and his ads are running, for example, he'll be doing 3 other things while that ad is running, and that's already counted as a view. YouTube Premium I said that's what I said. I know he has premium, but that's the thing, that views I feel are extremely. But what do you think is a better superficial. metric then? CTRs or click-through rates, because then that means a tangible action has happened on your performance ad. That's my POV, because I feel views are not a credible metric. Yeah, so I have just little more nuance in this. I mean, this is also data has said this, especially if you talk to like a lot of influencer marketing agencies. How the view has come makes a big difference. Okay.
Like I think YouTube is it's almost appointment based, which is you go and you choose to watch. Yeah. Whereas if I am part of the 50 reels that you consume, then the value of the view probably diminishes. Which is why that CTRs just tend to be higher on a YouTube video. Because you have chosen to go there. So I don't think views are a useless metric. I think it does matter, especially given that the algorithm determines how many views you'll get. So more views equals to more retention is true. But I'm also talking about performance ads, not content. The view. यहाँ पे एक चीज हो सकता है कि ये बात कर रहा है YouTube पे, लेकिन वो अदर प्लेटफॉर्म तो वो चीज नहीं काम करेगी. तो वही चीज ना, इसीलिए पूरा कॉन्वर्सेशन YouTube के होते हैं कि ये साहिबत बोली वो भी सही है कि भाई परफॉर्मेंस मार्केटिंग, स्पेशली परफॉर्मेंस मार्केटिंग का वो बात कर रही है कि भाई जब तुम कैंपेन रन कर रहे हो, तुम पैसा लगा के ऐड रन कर रहे हो, तो सच में व्यूज का उतना वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुम जो अपना ऑडियंस डिसाइड किया वो तो उसको दिखाएगा मेटा. बट उसमें कितना लोग क्लिक करके वो जो भी चीज़ तुम प्रोडक्ट सेल कर रहा है या तुम कोई वेबिनार सेल कर रहा है, तो उसमें क्लिक करके जा रहा है और फिर वहाँ कन्वर्जन हो रहा है. तो चलो कन्वर्जन वाली चीज़ तो नहीं, पर कम से कम क्लिक थ्रू रेट, अगर 100 लोग भी देख रहा है तो 10 लोग कम से कम क्लिक थ्रू कर रहा है तो सही है. अगर 100 लोग देख रहे हैं, एक ही जन कर रहा है, तो खराब है भाई. मतलब एग्जाम्पल की. और वही जो तन में बोला वो भी सही है कि भाई व्यूज मैटर करता है. सपोज यूट्यूब और अगर इंस्टाग्राम का एग्जांपल, इंस्टाग्राम पे क्या है कि स्क्रॉल करते करते तुमको दिख जा रहा, तो तुम इंटेंशनली वो नहीं चूज कर देखना, वो दिख गया बस क्योंकि एल्गोरिदम चूज किया तुमको दिखाना. बट वही यूट्यूब पे तुम थंबनेल देखा, तुम टाइटल देखा, तुमको लगा कि नहीं इंटरेस्टिंग वीडियो है तो चलो देखा जाए, तो वहाँ पर व्यूज मैटर करेगा. और अगर वो थ्रू आउट देख लिया तो और मैटर करेगा. तो वही चीज वही दोनों डिस्कस कर रहा है. Content are very different. I'm talking about brand performance ad. But wouldn't you think that correlation would be very high? Actually, I would love to know the lines are blurring very, very fast between the two. Oh, between the two? No. So performance and organic. Performance and content and creative. No, so for us, for example, we don't run performance on stuff that we don't think will work on creative anymore, or very less. Makes sense. Why are you running shitty performance ad? You should run performance ad on something that's worth. See, this is not an ad. This is not an ad. This is an organic content that you're putting out. Correct. An ad will be a 20-second or 6-second, actually not even 20 seconds, a 6-second snippet of it which you're boosting and everyone knows it's an ad. That is going to get ignored heavily. That is the view that I'm talking about is superficial. The views you get on this video, organic. वो क्लियर कर दूंगा. परफॉर्मेंस एड जो तुम रन कर रहा है उस पर जो व्यूज आएगा वो ऑब्वियस बात है, तुम मालूम है तुम कुछ सेल ही कर रहा है, तो वो इग्नोर जैसा चली गया. और बोल रही ना कि अभी तो इतना कट थ्रोट कंपटीशन कि तुमको 6 सेकंड का ऐड रन करना पड़ता है परफॉर्मेंस में. 30 सेकंड तो बहुत दूर की बात है. तो वैसे भी नहीं देखे, तो वैसे भी तुम 2 सेकंड भी देख लिया तो काउंट हो गया व्यू में, पर व्यू थोड़ी ना मैटर किया. बट ये जो लोग पॉडकास्ट बनाया है या हम लोग का वीडियो जो देखेगा, इसमें अगर ऑर्गेनिकली व्यू आ रहा है कि हाँ लोग देख रहा है कि क्या बात कर रहा है या क्या उस पर रिएक्शन दे रहा है, तो हाँ वो मैटर करेगा. खुद चूज करके उसमें देखने आया है और लोग बैठ के देख रहा है. Content is good metric. But for example, last time I had shaved Tanmay's face. Oh, you did? In an organic way. It still lasted. Oh, what magic. Shave so deep it lasts a year. But I'm saying as an example, that piece of content does beautifully on performance and otherwise. But 5 years. Wait, you ran performance on that? पैसे नहीं मांगे थे. आपका तो क्या क्लोर करने आए यार यहाँ पे? आप टोफू. I thought I was no, but 5 years back, very tacky performance ad would also work. 5 years back. 5 years back. So 5 years back, I don't know whether you experienced it, but like very clear, 20% discount. ये वो पड़ा है. You know what worked 5 years back is not going to work now at all. But today we are realizing that if content is not central to performance or organic or whatever, if the creative element of it is below a certain hygiene level, people are just fatigued. They will skip over it. 100%. Yeah. Directionally, as clutter grows up, good content का value and उससे ही performance होती है. Like we make these 4 minute reels, उनके ऊपर भी हम पैसे डाल देते हैं तो उससे business होना शुरू हो जाता है. Because it's so refreshing to see something which is not going to sell to you that you actually watch it. And business viewer, because you're interacting with the ad, you're clicking buy now or something. That's CTR, no? That's not. I don't think people care about being sold to. Okay, I think so? I don't think people care about being sold to because they're being sold to all the time. Everything is a sell, right? Whether it is the news or whether it's a politician to whether it's even sport.
right? Technically, BCCI is selling cricket to me consistently, right? Everything is you're being sold. There's some financial agenda behind it. Just sell it well. I don't mind. Just have my attention and then just sell it well. Also, people don't like to be told what to do. So when your ads are like made in a certain way, you're expecting the guy to go. Don't be tacky, bro. Like just don't be tacky. Like dating is also technically Selling. sales. Selling for long-term relationships. It's technically that. Just do it well, bro. Basically, game इतना elevate हो गया है कि my expectation from any piece of content is just gone up. मतलब any piece of And I think advertising. a very good point. I think the intelligence of the viewer is, and I mean intelligence in a very content first way. Someone watching the कुछ खास है Cadbury ad 25 years back. But Cadbury मेरे सामने नहीं ले. For me, that is such good advertising. Yeah. I don't think that will work today because that was very like, Exactly. you know, it was very obviously trying to make you happy and all of that. I think today it becomes very And the difficult. quality of that creative benchmark to the average creative of that time was spectacular. Correct. Yeah. Right? Average creative of now is like the Very Just bar saying the is- Limca dancing, the little dancing girl under the waterfall, will it work right now? No, that time it was a super duper hit. Yeah. Right? All of this. क्लोजअप का भी जो ऐड था वही बात है कि भाई अभी स्टैंडर्ड इतना एलिवेट हो गया है, मतलब सब इतना अच्छा हो गया ऐड बनाने में कि लगता ही नहीं कि ऐड है. तो अभी का जो क्रिएटिव होगा वो उससे ही बेटर होना चाहिए. मतलब जो स्टैंडर्ड है रेज होगा. मतलब पहले वही बोल रहा ना कि पहले जो लिटिल का ऐड हुआ, कोलगेट का ऐड हुआ या जो भी जिंगल वाला टाइप का ऐड हुआ, तो उस समय का हिसाब से जो एवरेज था उससे वो बेटर था. तो वही सीन अभी भी है, जो अभी एवरेज है उससे बेटर तुमको बनाना पड़ेगा. कंटेंट या ऐड या परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाला क्रिएटिव कुछ भी, तब जाके वो सेल होगा. तन्मय जो बोला वो भी वैलिड पॉइंट है कि भाई अभी सब इतना इंटेलिजेंट भी है कि आज का कंज्यूमर इतना इंटेलिजेंट है कि भाई सबको पता है कि हर मोमेंट में हर समय कुछ ना कुछ बेचा ही जा रहा है. किया ही जा रहा है तुम्हारा क्योंकि अटेंशन ही ऑयल है, जैसा सब बोलता है कि भाई अभी के टाइम में अटेंशन इज ऑयल, कि भाई अटेंशन का वैल्यू उतना ही है जितना पहले टाइम पे ऑयल का था. तो सबको मालूम है कि सब मेरा अटेंशन का पीछे है. तो किसी को उससे आपत्ति नहीं है. आपत्ति किससे कि भाई तुमको अगर मेरा अटेंशन के लिए फाइट करना ही है तो कम से कम मेहनत करो, अच्छा क्रिएटिव बनाओ, अच्छा ऐड बनाओ. मतलब मेरे को देख के अच्छा हाँ, कि लगे, मेरे को इंटरेस्ट है सच में, तब हम चेकआउट करेंगे तुम्हारा पेज, तब हम तुम्हारा वेबसाइट चेकआउट करेंगे, तुम्हारा सच में प्रोडक्ट खरीदेंगे. हाँ, फिर रिव्यूज देखेंगे, उसमें रिव्यूज अच्छा लगा तब जाके प्रोडक्ट खरीदेंगे. क्योंकि एंड ऑफ द डे भाई वर्ड ऑफ माउथ से ही सेल होता है. चाहे तुम जितना भी अच्छा क्रिएटिव बना दो, तुम्हारा वेबसाइट खोल के अगर रिव्यूज सब खराब है तो भाई वो नहीं खरीदेगा, वो रिस्क लेगा. क्योंकि वहाँ तो ऑथेंटिक है ना कंटेंट. तुम फिर भी अपने से बनाए तो तुम तो अच्छे इच्छा बोलेगा अपना प्रोडक्ट के बारे में. वो कंटेंट क्रिएटर पैसा लेके ही बनाया, पैसा लेके ही उसको भी पता है, ऑडियंस को भी पता और क्या, इतना स्मार्ट है सब कुछ. तो इसीलिए रिव्यूज अगर अच्छा रहा तो तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा. और जैसा भाई जैसा फेबियन बोला था कि भाई मार्केटिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा प्रोडक्ट. अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू लोग ही एक दूसरे को रिकमेंड करेगा तुम्हारा प्रोडक्ट कि भाई वो चीज ट्राई करो, वो वाला चीज खरीदो. तो वही चीज है. This again ties into dopamine thresholds of today. Yeah. Okay. So Say more about that. So per unit of, I'll call it effort, right? Per unit of content, as dopamine thresholds go up, okay, per unit effort put in per unit of content on the platform has to keep going up, right? Like there was a time where reels were shot on phone. Now you have a category called Instagram DOPs. For charging $25,000 a day to come and shoot in your house. It's legit, right? Like fashion influencers and all, they have like Instagram DOP, which is gimbal लगाया फोन के ऊपर gimbal लगा के घर के अंदर मिनी स्टूडियो बनता है. और ये एक बात बताओ, do you see a positive like a direct correlation of production value to how well a creative does, or is it an inverse correlation कि actually जितना voyeuristic लगता है जितना I'll explain. I think इसमें मेरे को बहुत ही like I'll explain. ये सही टॉपिक अभी छेड़ा है कि भाई प्रोडक्शन वैल्यू पे डिपेंड करता है या कि थोड़ा सा लगे कि ऑर्गेनिक टाइप का है, इम्प्रॉम्प्टू टाइप का है. अब देखो Does production value help? Yeah, it does. Okay, so per unit of effort or as saturation increases, effort put into per unit of content or extremism attributed to per unit of content, whether it be ideological extremism, okay, or any other kind, okay, like shock value keeps going up. Yeah, this goes across, this works on Instagram, it works on dating as well.
right? Since how dating? Because dopamine threshold is so high, you're just left, right, swiping on so many people. You have to stand out. Yeah. You have to do more. You just have to do more. Like adding- guy who makes a PPT of why you should swipe right on me as his profile is gonna get more matches, Yeah. right? But effort is higher. Effort is higher. This all is tied into dopamine thresholds because everyone's dopamine threshold is so much higher. It's just simple. I also think there is an income part of it, like, you know, the little ad you were talking about from 30 years ago. They were trying to kind of appeal to 100 crore people or whatever the population was that back then, like the entire population. But now, like the ads, like, you know, the Whole Truth 4-minute ad you're talking about, you're still talking to the 1 crore person. So the effort and the quality of, we are saying the quality of ads are going up, but it's because the ads we are seeing are only catered to us. Yeah. When I It's look, targeted specifically. when you go to a news channel, like a Hindi news channel, and you see the ad, it's still, the ads are maybe not as sophisticated as maybe what your 4-minute ad was. So, But actually there's a वही dichotomy है, जितनी मासी ad होती है, actually production value उतनी high होती है. Is it? जितना बड़ा star होता है, उतनी बढ़िया location होती है. You will get Deepika Padukone go to Mauritius, shoot a song, all of that. But to appeal to you and me, I will bring you into my home. मैं अपने कैमरा पे कुछ बात करूँगा, vlog बनाऊँगा, कुछ करूँगा, and that will appeal to you. That's why I was asking कि production value और इसका correlation आपने क्या देखा है? No, something prettier, but yeah, it's never just production value will not save you. There is an interesting thing there. It's right? never- Like, it's because never just. आप जाके सही बात बोला ना भाई, पहले बोल रहे कि प्रोडक्शन वैल्यू मैटर करता है, बट वही बात है जो अभी ये लोग डिस्कस किया कि भाई जितना मासी वीडियो रहेगा, मतलब तुमको अगर पूरा मासिस को पहुंचना है तो तुम हायर करो शाहरुख खान, सलमान खान को, और फिर वो लोग अपील करेगा, वो लोग बोलेगा, तो एक होता है इम्पैक्ट पड़ता है भी एक जनरल ऑडियंस पे कि हाँ भाई अमिताभ बच्चन इसका ऐड कर रहा, धोनी इसका ऐड कर रहा, तो ट्रस्ट वर्दी वाला चीज़ है कि हाँ अमिताभ बच्चन पे ट्रस्ट करते हैं या क्या बोलते हैं इस पे धोनी पे ट्रस्ट करते हैं, तो ये प्रोडक्ट का इंडोर्समेंट करा तो प्रोडक्ट भी अच्छा होगा. बट बात वही है जो डोपामिन वाला थ्रेशोल्ड वाला ही बात बोला कि डोपामिन थ्रेशोल्ड इतना हाई हो गया कि तुमको स्टैंड आउट करना पड़ेगा. तो स्टैंड आउट करने को रैंडमनेस भी तो काम आता है ना, जैसे कि हाई प्रोडक्शन का लो प्रोडक्शन वैल्यू टाइप का वो लग ही नहीं रहा, तुमको लग रहा है कोई रैंडम इंसान का कंटेंट है, पर फिर वो रियलाइज हुआ कि भाई स्विच हो गया एंड में और वो ऐड में कन्वर्ट हो गया. तो अरे यार क्या मस्त ऐड बनाया, मतलब मेरे को तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि ऐड जैसे तुम्हारा इसका एग्जांपल है, धरना का वीडियो देखा होगा तुम. किसका धरना वो चिक चिक बूम वाला जो नहीं एक बनाई थी वीडियो. अच्छा हाँ आईप्लेक्स के अंडर में वो लोग को हैंडल होता है. तो धरना का बता रहे, उसका तुम रील्स देखना, पहले तो एकदम प्रॉपर ऑथेंटिक तुम्हारे घर में जैसा कुछ भी होता है ना, रॉ टाइप का. हाँ पूरा रॉ जैसा लगे कि जैसे घर में बच्ची का बर्थडे है तो वो मम्मी का रोल करती है, ठीक है. तो ऐसे एक ऐड देखे थे, घर में उसके बेटी का बर्थडे था, मम्मी कैसे मम्मी उठती है, क्या क्या चीज प्रिपरेशन होता है, पापा बनियान पहने हुए रहते हैं, उनको बोला गंजी तो पहन लो, बनियान तो पहन लो, ऐसे करके बुलाती है. फिर उसी में एक ऐड वाला चीज इंटीग्रेट कर दी. सवरना एक क्लोथिंग ब्रांड है ऑनलाइन, अभी से लेटेस्ट वाले में, तो उसका वो इंटीग्रेट कर दी थी उसमें, बहुत सीमलेस लगा था. तो भाई शॉक वैल्यू कुछ होना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ तो शॉक वैल्यू मिल रहा है तो लग रहा है कि अच्छा ठीक है, मेरे को पता ही नहीं चला था इतना देर तक ये ऐड है. तो जैसे उसी में होता है ना कि ये चीज को इससे पहले ऐड कर देंगे कि उसमें बच्ची का कपड़ा देखती है उसकी मम्मी, अरे तुम्हारा कपड़ा तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से ली, तो उसमें वो चीज फिर इंटीग्रेट होता है कि हाँ मैंने ये कपड़ा सवरना से लिया है, ऐसे वैसे ये वाला चीज. Voyeurism sells, and voyeurism happens when you remove there's Finsta for a reason, there's Be Real for a reason, because people are like, yeah, show me the real side, don't show me production value is not how much money you spend. Of course, okay. I'm using it as a loose term, but finish होता है एक और, right? Like if I just use nice music, उसके लिए आपके you need to have aesthetic taste. But I think a correlation doesn't factor for causation part of that. Like I don't think it's a blanket thing that the production value can figure के niche target audience है या मासी है. But that point is right. The massier the ad, the more basic the ad. Like you're not trying to be too meta with the storyline, or too meta with the when I meet concept. Most early startup founders who are trying to figure out content, their first question is आपका सेटअप कैसा है, आपका स्टूडियो कितना, कैमरा कौन से कैमरा, कितने लोग, कितने डीओपी, कितने कॉपीराइटर, कितनी बड़ी टीम है, कितना पैसा लगता है, all of that. And I realized that from the outside it's assumed that 90% of the solve is
Infra. and go. When from the inside, I'm sure all of you would agree that 90% is always the scripting, the writing, the thought, कि क्या बोलने वाले हो, etc. And 10% is the refrain. एकदम फैक्ट बात है। तुम्हारे पास कौन सा कैमरा है, कितना डीओपी है, कितना टीम मेंबर्स है, ये सब सच में मैटर करता है। मैटर करता है भाई कॉन्सेप्ट। एट द एंड ऑफ द डे वही चीज, डोपामिन थ्रेशोल्ड बढ़ चुका है, तो तुम कितना बड़ा शॉक वैल्यू दे सकता है वही। अब तुम चाहे वो एंड्रॉइड से बनाओ, चाहे वो तुम पॉइंट एंड शूट कैमरा से बनाओ, तुम्हारा एंड रिजल्ट क्या है वो मैटर करता है। और उसमें मैटर नहीं करता। और जितना लोग भी ऐसे अप्रोच कर रहा है कि भाई मेरे को ऐड बनाना है, तो मेरे को देखना है जो प्रोडक्शन टीम हो कितना बड़ा है, या वो पहले किससे, हाँ ऑब्वियसली बात है पहले किससे के साथ काम कर चुका है, वो एक बड़ा सा फैक्टर है कि पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ पोर्टफोलियो हो गया, वो तो अच्छी चीज़ है। बट जैसे तुम सिर्फ अगर ये देख रहे हैं कि बस क्या कौन सा कैमरा है, कितना कैमरा है, कौन सा लाइट का सेटअप है, कौन सा माइक, ये सब देखो कि भाई स्क्रिप्टिंग कैसा है, वो उसका थॉट प्रोसेस क्या है उस ऐड के पीछे, वो क्या सोच के वो ऐड बना रहा है, और फिर उसके बाद डिसाइड करो कि क्या करना है क्या नहीं। 90% is just outputting. Just output 50 things and then you'll eventually. Quantity leads to quality. It's quantity, is it? Like for example, when we spoke last time, even now, like Revan said that if I'm putting 6 hours of effort in an episode or in a video, 3 hours goes in the first line and making sure the first line shots is right. for like a reel. I don't do long form. Insane amount of depth on content. Like everyone wants to like create content. My view is that even on entrepreneurial side, a lot of people want to do it, and a lot of people will invest in infra. You're right. People will say your infra is the investment to make, and we'll hire a team and we'll get amazing people to mentor us, etc. But if the meat is not there in the core, then no amount of production value will actually work. मेरा simple framework is content is what and how. We focus too much on the how. Yeah. कैसे करेंगे, ड्रोन उड़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. The what is way more important. What is very important. And I also think when is very important because we are evolving, changing, retention is going here and there, so much of stimuli. When you release what really matters. सुबह 11 बजे, शाम के 7 बजे. Highest peak hours on all social media. Actually say that. Yeah, actually, I'm curious. Whenever my content is ready, I upload it. No, I feel same. context is very important. Context, okay. So not when posting time. No. When I'm saying when is what mindset is the society and what is happening around you right now? Who are you targeting? वो क्या कर रहे हैं अभी? Like, that when is very very But important. 11 and 7 you're seeing consistently across context, across categories. मैं 11-7 बजे करता हूँ क्योंकि मेरा डेटा कहता है कि 11-7 बजे I mean it's natural, right? 11 बजे तक लोग ऑफिस पहुंचते हैं, सबसे पहले फोन शाम के 6 बजे खत्म होता है. In this insight of 11-7 is true for everyone. Good content works at any time. Yes, absolutely. Good content works at any time. रात को 2 बजे डाल दो. तुम्हारे पास फुल लेयर कभी चलता है. समय रात के 2 बजे इंडियंस गॉट लैटिन डालेगा, अगले दिन 3 मिलियन हो जाता है. और अगर वो व्यूज आ रहे हैं तो फिर वो अच्छा कंटेंट है तो पुश हो गई. And that doesn't see at what time does that get pushed. My best ever video was coincidentally the day it was the Cricket World Cup final and India won it, and still my video did really well. Like I think even though the entire Instagram was no one was watching like random reels. मैंने शांतनु जब लोग आके पूछते हैं ना कि कब डालना है तुम बताओ, उनको मैं सीधा 11-7 बोलता हूँ क्योंकि उनको लगता है कि दिस इज द सीक्रेट हैक टू एवरीथिंग. एक्चुअली व्हाट दे रियली वांट टू हियर इज भाई तू जस्ट प्रेस पब्लिश, जस्ट हिट अपलोड. तू 5 बार कर, तेरे खुद को समझ में आया कि रात के 3 बजे नहीं डालना होता वीडियो. यू ओनली नो how do you measure, like all of you have spoken about content compounding. Like all of you in your own ways have compounded content. तुम्हारा वीडियो देखे थे, उसमें बता रहा था कि भाई जो व्हेन वाला चीज में ऑडियंस का स्टेट ऑफ माइंड भी पता करना बहुत जरूरी है. जैसे फेस्टिव सीजन में हम लोग का इमोशंस कैसा होता है, उस टाइम तुम वैसा वही होगा कि कॉन्टेक्स्ट का हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि अभी चल क्या रहा है. आप सपोज क्रिकेट का टाइम चल रहा है, आपको मालूम है क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट सबको देखने में पसंद आ रहा है, तो उस समय तुम अगर कोई क्रिकेटर को हायर करके तुम ऐड बना रहे हो तो ऑब्वियस बात है अच्छा परफॉर्म करेगा. कि क्रिकेट रिलेटेड तुम कंटेंट बना रहे हो, सबको मालूम है अच्छा परफॉर्म करेगा. जैसे अभी नवरात्रि गया तो नवरात्रि में जितना भी गरबा रिलेटेड कंटेंट हो, चाहे वो वेरियस फील्ड्स हो, जैसे मेकअप आर्टिस्ट तुम गरबा में कैसा टाइप की बिंदी लगाएं उसका बता रही थी, वो पॉइंट को तुम इंटीग्रेट करो. बस अपना फॉर्म ऑफ कंटेंट में तुम उस चीज को इंटीग्रेट कर रहा. फिर जैसे डांसर लोग बता रहा था 5 इजी स्टेप्स टू डू इन गरबा. फिर जैसे इधर अगर ईस्ट साइड आ जाएंगे तो दुर्गा पूजा में कैसे टाइप से साड़ी पहने, दुर्गा पूजा में कहाँ कौन सा पैंडल जाना है घूमने, तो वो सब चीज़ है, वो सब चीज़ वर्क करता है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में कि भाई क्या टाइम चल रहा है, कैसा माहौल है, तुम्हारा सेट ऑफ ऑडियंस अभी क्या कर रहा होगा, क्या क्या नहीं कर रहा होगा, किस माइंडसेट में होगा, उस कॉन्टेक्स्ट से बोल रही है.